Right. Well, hello everyone. Jai Bhim and Namo Buddhaya. Let me welcome you all. Firstly, on behalf of Ambedkar International Mission London. And thank you for joining this event. I am Satpal Mamman. And let me firstly acknowledge the devastation which has been caused by COVID-19. Each one of us has been affected in one way or the other. Either you have been personally affected or know someone who has been. And we are sensitive to the difficult time that everyone is experiencing at this point in time. I am also aware that a number of our distinguished speakers, guests caught the virus. But despite that, they are here with us today. Earlier on, Ms. Ria Singh, who was listed as one of the speakers, her mother contracted the virus. So she will not be able to join us. And we wish her mother speedy recovery. Now, thank you again, for your dedication and courage in giving up your precious time and despite personal difficulties. Now, there are a few housekeeping tasks. I just want to say firstly that for the record, this meeting acknowledges the tremendous hardship currently being faced by the Indian people. It is heart-wrenching to see so much human suffering on television in what can only be described as a catastrophe and a major failure of governance. Of course, there is now world focus on India with international aid being provided. Now, Britain itself has announced an aid package to India. I would share with you that today, in a British newspaper, The Times, there was a headline. The headline said, Modi leads India out of lockdown into a viral apocalypse. You can see how the international community is seeing India and the suffering of the Indian people. So before we invite each of our guest speakers, I want to acknowledge a number of important people without whom today's event would not have been possible. Firstly, I want to especially thank Shri Shekhar Bodhakar and also Shri Ravinder Lagade. And also want to extend special thanks to Piyush Chauhan, who agreed to be the co-host for today's event. His task will be to monitor chat activity and ensure the smooth running of this event from technology perspective. I also want to acknowledge and say thank you to Nitin Tulkar for his support. And mustn't forget our colleagues at the Ambedkar International Mission London, namely Mr. Subhash Chassal, Mr. Prem Man, Mr. Surinder Memi, Chitansu Kane, Ramji Bangar, Amarnath Bangar, the same Leal, and Mr. Shami Leal. They continue to be the bedrock of the mission. I'm aware that a number of you may not be familiar with the Ambedkar International Mission in London. So I will just take a few minutes to say a few words, not too much. I know you're eager to hear from the speakers. The AIM London was established in 1974
due to the inspiration of a group of dedicated Ambedkarites arriving in Britain in the early 60s, mostly from the Indian state of Maharashtra. The first Dr. Ambedkar's Jayanti was celebrated in 1962 in London by this small group of Maharashtrians. During the course of this next decade, they formed the Indian Buddhist Society to observe and celebrate Buddhist religious festivals. It was a small group initially, but were later joined by a group of staunch Punjabi followers of Dr. Babasaheb Ambedkar. Now, over the years, AIM London has continued to play a role to spread the message of Dr. Babasaheb Ambedkar by organizing annual events and to promote Buddhist teaching by establishing a Buddha Vihara and to accommodate Buddhist monks doing Dhamma Dhuta work supported by the Buddhist laity here in East London. Now, at the time AIM London was established, now we have a Buddhist Cultural Center, and we are currently building a Vipassana meditation hall to spread the Buddhist culture. Now, during the course of this event, as I said earlier, everyone will be put on mute. Only the invited speaker will be unmuted. So I request to all stay muted so that we can focus on the address given by our distinguished speakers. This is the first time that we have such an eminent list of speakers. Now, they are all experts in their fields. They are more than experts. They are scholars and activists. Each one is capable of delivering powerful lectures individually. Unfortunately, due to time constraints, we can only hear a short message from each speaker for 10 minutes. The other thing I want to bring to your attention is this, that please be aware that this event is being recorded and it will be shared on social media. So please bear with us as we go through the list of speakers. And of course, you can put any messages in the chat. And unfortunately, you will not be able to interact directly with the speakers. But if there is a question that you want to address briefly, then we can invite the relevant speaker to address that question. But it will mostly be us listening to what our distinguished guests have to say and then wrap it up towards the end. And I hope that there are no objections in terms of us being able to record the event and then to share it on social media later on. So, looking at the list, I think we have got most of our distinguished speakers online. And so it gives me a distinguished honor and privilege to invite, and I am going to be inviting Mr. Sudhir Raj Singh. And Sudhir Raj Singh, everyone knows, is a great motivational speaker. So, Sudhir Raj ji, could you be able to address us? Yes, would yes. you like to wait until later? नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं ओपनर हूँ. Oh, I like the great spirit. Yeah. बिल्कुल. और ओपनर का अपना ही मजा होता है. So, Sudhir Raj Singh, you can see is a very easy and approachable manner, and he speaks on Buddhist science and philosophy. And not only speaks on it, he is a living specimen of Buddhist science and philosophy. And I know you specialize in Indian languages,
in particular Pali. So they are saying, over to you, sir, to deliver your message. यस सर। तो मैं आज पाली से स्टार्ट करूंगा क्योंकि बाबा साहब का 130वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और महामारियां तो हमारे लोगों के लिए बड़ी यूजुअल होती हैं, वो आती जाती रहती हैं। हम तो महामारी में ही पैदा होते हैं, महामारी में बढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो 130वां बर्थडे है, ये खास मायने में इसलिए भी है क्योंकि आपने पाली से स्टार्ट किया है। अब आपने कहा है कि मैं पाली जानता हूं और पाली से ही शुरू करूंगा। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का पहला, दूसरा, तीसरा वॉल्यूम तो बड़े शौक से पढ़ते हैं और हम सामने वाले लोगों को बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां भी बकते हैं। और लगभग सारा का सारा ही जो अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का जो वॉल्यूम है या जो भाषण है, हमारी मंचों से वही जा रहा है लगभग पिछले 67 ईयर्स से, बाबा साहब के जाने के बाद से, 1956 से। मगर बाबा साहब ने एक वॉल्यूम और भी दिया है जो बड़ा मजेदार है, जिसका नंबर है 16वां वॉल्यूम। और 16वें वॉल्यूम को कोई नहीं देखता, उसको उठा के कोने में फेंक देते हैं। मैं किसी से बात भी करता हूं तो कहते हैं जी क्या है वो 16वां वॉल्यूम, हमने तो देखा नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो जाना नहीं। तो मैं कहता हूं भाई उसको देखो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान, अगर दुनिया का नंबर 1 विद्वान अगर एक वॉल्यूम 16वां देकर जाता है तो कुछ मायने हैं। दरअसल वो जो वॉल्यूम है वो पाली की डिक्शनरी है, पाली की ग्रामर है, पाली के डेली यूज के उसमें सेंटेंसेस हैं और पाली की अलग अलग बातें हैं जो लगभग 200, 250, 300, 400, 500 करीब ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज में आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति, महान, जो नंबर 1 के हमारे ज्ञाता रहे हैं पूरी दुनिया के, वो इंग्लिश का डिक्शनरी नहीं दे के जा रहे हैं, संस्कृत का नहीं दे के जा रहे हैं, मराठी का नहीं दे के जा रहे हैं, हिंदी का नहीं दे के जा रहे हैं। इंग्लिश में सारे वॉल्यूम लिखे हैं, इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहे हैं। हिंदी में सारा काम किया, हिंदी क्षेत्र में सारा काम उन्होंने किया, दिल्ली में रहे, उसका कोई वॉल्यूम नहीं दे के जा रहे हैं। संस्कृत के लिए मारा मारी हुई, जर्मन में जाके पढ़ी, किसी ने पढ़ाया नहीं, तो उसके लिए कह के जाते कि संस्कृत जरूर पढ़ो क्योंकि सामने वाले लोगों का पता चले कि उन्होंने लिखा क्या है। मराठी में वो खुद पैदा हुए, मराठी बोलते हैं, मगर मराठी के लिए भी नहीं बोलते हैं। तो पाली का ही डिक्शनरी दे के जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान पाली की डिक्शनरी 16वें वॉल्यूम में आपके हाथ में दे के जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ आदेश है उनकी बातों में। वो कहना चाहते हैं कि पाली पढ़िए, पाली पढ़ाइए। तो वो क्यों कहेंगे? पाली एक ऐसी लैंग्वेज है कि इससे आपको रोजगार तो मिलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, कहीं मंक्स बन सकते हैं, कहीं जो भगवान बुद्ध के सेंटेंस हैं उनको पढ़ा सकते हैं या कुछ गा सकते हैं, कुछ कंट्रियों में नौकरियां मिल सकती हैं, मगर पाली से ज्यादा आपको रोजगार नहीं दे सकती है। पाली कोई ऐसी लैंग्वेज भी नहीं है जो पूरी दुनिया में इंग्लिश की तरह चलती हो, मगर फिर भी वो पाली के लिए कह रहे हैं और वॉल्यूम स्पेशल दिया है उन्होंने, और पूरा अच्छा खासा 600-700 पेज का वॉल्यूम है जो उन्होंने दिया है। तो क्या रीजन रहा है और क्यों लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया और क्यों फेंक दिया? क्योंकि मैं पाली देख रहा हूं, पाली पढ़ रहा हूं, पाली बोल रहा हूं, पाली जान रहा हूं, एप्लाइड में हूं, मैं कोई साहित्यिक पाली नहीं पढ़ता। तो मैंने ये जाना, मैंने ये समझा कि अरे बाबा साहब ने जो दिया है भाई, ये तो सारे जितना भी हमारा हिस्ट्री है, जो हमारी जेन्युइन हिस्ट्री है, जो हमारी ट्रू हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, जो हमें कहीं नहीं मिलता, वो हमें पाली में मिलता है। दरअसल बाबा साहब ने जब पाली पढ़ी होगी और जब पाली में उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा होगा, वहां से पढ़ के जब वो डाला होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट किया होगा, तब उनको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें अपना इतिहास जानना है और सारा इतिहास जानना है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद में तो वो रिडल्स दिखते हैं कि हिंदुइज्म का रिडल्स क्या है, मगर हमारा रिडल्स क्या है, हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ से निकले हैं, ये हमें पाली बताती है। इसलिए उन्होंने पाली ही के लिए हमें कहा है कि पाली पढ़ना है। हमारे लोग पाली को बहुत छोटी लैंग्वेज समझ के छोड़ देते हैं, कहते हैं क्या है, फिर पाली को ऐसा भी समझते हैं कि ये तो एक धर्म की भाषा है, एक रिलीजन की भाषा है। मतलब बाबा साहब के जाने के बाद में जो भगवान बुद्ध का जितना भी साहित्य है उसको कंपेयर कर दिया किसी रिलीजन से, जैसे मोहम्मडन्स का रिलीजन हो गया या क्रिश्चियंस का हो गया या कुछ और भी हो गया, तो ऐसे रिलीजन से कंपेयर करके उसको उठा के साइड में रख दिया कि भाई हमको रिलीजियस नहीं होना है। ये काम बहुत सारे लोगों ने किया जो कुछ ज्यादा बाबा साहब को पढ़ गए और समझ गए, तो उन्होंने उठा के रख दिया कि हमको रिलीजन में नहीं आना है। दरअसल वो रिलीजन है ही नहीं, वो पूरी हिस्ट्री है जो बताती है कि आप कहां से चले थे और कहां पहुंचे। एक एक शब्द, यानी एक एक जो शब्द है, एक एक जो वर्ड है, अल्फाज है, जो लफ्ज है, वो बताता है कि हम कहां से चले और कहां पहुंचे और क्या हैं हम। क्योंकि जो
ये जो 6 लाख गांव के करीब जो गांव हैं, इनके जो नाम है वो पाली पे आधारित हैं। मराठी में जो बातें होती हैं, जो मुहावरे, वो पाली पे आधारित हैं। हमारे यहाँ जिसको हिंदी बोला जाता है वो दरअसल पाली है, वो हिंदी है ही नहीं, हिंदी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। क्योंकि पाली इतनी पुरानी और है कि वो स्मूथ होते 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 आज की जो भाषा बोल रहे हैं हम, जो मैं बात कर रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं, ये दरअसल पाली का ही एक सरल रूप है। और इसको मॉडिफाई करके, इसको संस्कारित करके, इसमें कुछ बाहर की भाषा मिला के जो इसका संस्कार किया गया, उसको उन्होंने अलग नाम ना देके संस्कृत नाम बोला। तो 80% हम हैं उसमें, यानी जो संस्कृत भाषा में 80% हम हैं और 20% वो शब्द हैं जो बाहर से आए हुए हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब बाबा साहब का 16वां वॉल्यूम आप अलमारी से निकालेंगे, उसे धूल झाड़ेंगे, उसे साफ करेंगे, उसमें रोज 10-5 शब्द देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि अरे आपकी दादी, आपकी अम्मा, आपके दादा, आपके चाचा, आपके गांव में जो लोग हैं वो यही तो बोलते थे। जो लोग पंजाब के हैं उनके लिए तो मैं खास तौर से कहूंगा कि जो पंजाब शब्द है वो भी पाली का है, पंज आब, यानी जहां पंचशील का आब बहता है। क्योंकि नदियां वहां 6 हैं, 6 नदियां हैं। 5 नदियों की कहानी वैसे बना दी है कि पंजाब है, आब माने जो अरबी भाषा में होता है वो पानी को बोलते हैं, मगर यहाँ जो मतलब है वो है पंज आब, यानी कि पंचशील का बहना, पंचशील का बहाव। तो सारा पंजाब, सारा अफगानिस्तान, सारा ऊपर तक का एरिया, मिस्र तक तो सम्राट अशोक ने भिक्खु भेजे हैं, तो सारा का सारा वो बुद्धिस्ट एरिया रहा है, पाली का एरिया रहा है, पाली ही बोलते हैं। सारी पंजाबी जो बनी है गुरमुखी, वो पाली से बनी हुई है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि 16वें वॉल्यूम का समय आ गया, उसको निकाला जाए, उसको पढ़ा जाए। पाली को साहित्यिक रूप की बजाय उसको अप्लाइड में, जो प्रयोग वाली भाषा है, उसमें पढ़ा जाए। एक बात, क्योंकि आपने 10 मिनट दिए तो 2 मिनट में और लूंगा। बाबा साहब का जयंती है तो बाबा साहब के 3 बातें दुनिया जानती है: शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो संगठित वाला जो मामला है ये अभी तक हुआ नहीं है। दरअसल हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई आपको संगठित रहना है, आपको संगठित होना है, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है। मगर हर संगठित कहने वाला व्यक्ति खुद संगठित नहीं है, उसने एक अपना संगठन बना रखा है। और ऐसे दसियों हजार संगठन काम कर रहे हैं जो अलग अलग सबको कहते घूम रहे हैं, आप संगठित हो जाओ, बाबा साहब ने कहा है, आप संगठित हो जाओ, बाबा साहब ने कहा है। मगर मैं संगठित नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तो भाई कर रहा हूं। अरे भाई आपको भी तो कहा है, आपने नहीं समझा कि बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा है, तो आपको भी तो कहा है। आप बाबा साहब से परे थोड़े ही हो। आपने हमारे दसियों हजार टुकड़े कर दिए अलग अलग संगठन बना के। हम तो कास्ट से ही परेशान थे कि इतनी सारी कास्ट हैं, अब इतने सारे संगठनों को और संभालेंगे तो कास्ट भी हो गया, इतने सारे संगठन भी हो गए। तो एक इस बर्थडे पे और पहले भी और अभी भी एक वॉइस आनी चाहिए पूरी दुनिया से कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ आप। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हम 15% नहीं पहुंचेंगे। 15% से कोई काउंसलर, कोई एमएलए, कोई एमपी नहीं बनता, वो बनता है 51% से। तो 15% इकट्ठे होंगे तब जाके कहीं कोई लोग हमसे शामिल होंगे, आएंगे, जाएंगे, बात करेंगे। अब ये 15% लोग ही अलग अलग 10,000 संगठन बना के और बाबा साहब की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। दरअसल बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाते, बाबा साहब का मरण दिन मनाते हैं, बाबा साहब को और मारते हैं। बाबा साहब ने कब कहा था कि भाई तुम इतने सारे संगठन बना के और ये नारा लगाना कि संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो। तो बाबा साहब को अगर समझना है तो बाबा साहब की बात तो मानो। ये बाबा साहब का नारा लगाते हो कि हम जन्मदिन मना रहे हैं और बाबा साहब के उसूलों के खिलाफ काम करते हो। बाबा साहब ने जो कहा था कि पावर बनानी है, आप अलग अलग बना के बाबा साहब का कैसा जन्मदिन मनाते हो कि इस जन्मदिन पे मैंने भारत के सभी ऐसे राजनेता जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं, उनको एक साथ जन्मदिन के मौके पे चाय पीते हुए नहीं देखा। आपने देखा किसी ने कि सारे के सारे जो नेता हैं वो बाबा साहब के जन्मदिन की खुशी में मिठाइयां बांटते हो, सबको आपस में गले मिलते हो, कहते हो कि भाई हमारे राजनीतिक मामले अलग हैं या धर्म के मामले अलग हैं, चलो आज बाबा साहब का बर्थडे, आज हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम सब एक साथ बैठ के एक मंच पे चाय पी सकते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। मैंने और लोगों को देखा है, और जो राजनीतिक लोग हैं या धार्मिक लोग हैं या जो आर्थिक लोग हैं या जो सामाजिक लोग हैं कि वो अपने अपने फेस्टिवल पे खूब आते जाते हैं, मगर बाबा साहब के तो मरण दिन पे यानी 6 दिसंबर पे भी ये लोग इकट्ठे होने का सोचते भी नहीं, एक साथ मंच पे भी नहीं आते कि चलो आज शोक का दिन है, आज दुख का दिन है, तो आज हम दुनिया को ये बता दें कि हम एक साथ हैं, हम एक जगह हैं। तो भाई कैसा बर्थडे मनाते हो हमें तो समझ में आता नहीं, कैसे बाबा साहब का वो पालन करते हो कि सबको संगठित रहना है, हमें तो पता नहीं। मेरे ख्याल में मोहम्मद साहब 10 मिनट पूरे हो गए हैं और मेरी बात भी पूरी हो गई है शॉर्ट में, तो मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे सबसे पहले ओपनिंग का दिया और मैंने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
Sri Raj Singh ji, your message is a very powerful message. And what it is a challenge of our time to give effect to the organized element of the educate, agitate, and organize slogan that Baba Sahib inspired us. And how to bring about that solidarity is, as I said, is a big challenge. How to do it? And so we have the intellectuals who are amongst us, and they're in every country now. So it is about time that this thought needs to be given in terms of how we can strengthen our solidarity and our organization capabilities. This is an open subject, and it will be taken up, I'm sure, in due course. This is something where the Ambedkar International Mission is hopefully will be able to play some part together with others. And it's a theme which is important to everyone. And it's about time that this challenge is taken up. We have the capacity to do it. And it is a question of talking to each other and making it happen. And this will something that will be taking up in the coming months. So thank you so much.